Today we will talk about cares we should keep in mind while performing dynamic balancing. If you are performing dynamic balancing activity, always keep in mind that your vibration and phase reading should be stable. If you are performing a dynamic balancing activity, you have put your tachometer, you have put your sensor, and you are taking the initial run, and you measure a vibration at 10 millimeter per second at 120 degrees. So 10 millimeter per second is your vibration level, 120 degrees your phase value. So this should be stable. Retake it multiple times, 4 to 5 times. Vibration should be 10 millimeter per second and 120 degree, 10 millimeter per second, 121 degree, 10.1 millimeter per second and 119 degrees. Phase and vibration reading should be stable. But what if you retake the data and what you find? At first reading, you find 10 millimeter per second at 120 degree. You retake and you find 10 millimeter per second at 150 degree. You retake and you find 10 millimeter per second at 180 degree. Then you retake and you measure 10 millimeter per second at 110 degree. The phase is unstable. So the phase is unstable. What can be the reason of that unstable phase? One of the reason of that unstable phase readings is rotating looseness. So there is a possibility there is some sort of rotating looseness within your machine. That's why you are getting an unstable phase readings every time you collect the data. So your balancing activity will not be successful then. So always when you are performing dynamic balancing, while you are taking reading at initial run, trial run, correction run, trim runs, always take the vibration and phase readings multiple times at every run, 4 to 5 times, retake. The vibration should be stable, phase should be stable, vibration and phase should be stable. If you retake 4 to 5 times, vibration and phase reading should be stable. But if the phase is fluctuating, phase is not stable, then there is some sort of rotating looseness within your machine. You have to address that issue. Otherwise, your balancing activity will not be successful. So this was the one care we have discussed in this video. In the next videos, we will discuss which other cares we should keep in mind while performing dynamic balancing. So stay tuned, and if you have any question, drop us a message. We will reply you and we will discuss it. Thank you so much. आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम बैलेंसिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं मशीन पे तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी आप बैलेंसिंग करना स्टार्ट करें और जब आप इनिशियल रन ले रहे हैं तो आप ये देखें कि आपके पास जो वाइब्रेशन और फेज़ रीडिंग आ रही है क्या वो स्टेबल है, स्टेबल वाइब्रेशन आ रही है, स्टेबल फेज़ आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपने इनिशियल रन लिया, आपने डाटा लिया, आपके पास वाइब्रेशन आ रही है 10 मिलीमीटर पर सेकंड एट 120 डिग्री। उसको 3 से 4 दफ़ा आप रिपीट करें, 3 से 4 दफ़ा रिपीट करें और देखें वही वाइब्रेशन आ रही है 10.1 मिलीमीटर पर सेकंड 120 डिग्री, 10.1 मिलीमीटर पर सेकंड 125 डिग्री, 122 डिग्री। तो इतनी सी वेरिएशन तो चलती है। लेकिन अगर आपके पास वाइब्रेशन आ रही है 10 मिलीमीटर पर सेकंड एट 120 डिग्री और आपने रीटेक किया और वाइब्रेशन आ गई 10 मिलीमीटर पर सेकंड एट 150 डिग्री, फिर रीटेक किया और वाइब्रेशन आ गई 10 मिलीमीटर पर सेकंड एट 180 डिग्री, फिर रीटेक किया तो आ गया 110 डिग्री, तो फेज़ इतना अनस्टेबल है। जो अनस्टेबल फेज़ होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में रोटेटिंग लूजनेस की वजह से होता है। उसके अलावा और भी रीजंस होती हैं अनस्टेबल फेज़ की। तो अगर फेज़ आपका अनस्टेबल आ रहा है तो फिर वाइब्रेशन आप जो बैलेंसिंग एक्टिविटी है आपकी वो इतनी आसानी से लीनियरली नहीं होगी। ठीक है, तो आप फिर देखें कि जो अनस्टेबल फेज़ है मेरे सिस्टम के अंदर कहीं पे रोटेटिंग लूजनेस या कोई इस तरह का सिनेरियो तो नहीं है कि ये मुझे अनस्टेबल फेज़ मिल रहा है। तो बैलेंसिंग करने के दौरान आपने हर रन पे, चाहे वो इनिशियल रन है, ट्रायल रन है, ट्रिम रन है, करेक्शन रन है, जिस तरह का भी रन आप ले रहे हैं, हर रन पे आपने 4 से 5 दफ़ा रीटेक करना है। रीडिंग को रीटेक करेंगे तो आपके पास जो वाइब्रेशन और फेज़ को देखें, क्या वाइब्रेशन और फेज़ आपके पास स्टेबल आ रहा है। अगर स्टेबल आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है और आप इसको देखें। लेकिन अगर अनस्टेबल आ रहा है तो देखें कहीं रोटेटिंग लूजनेस वगैरह तो नहीं आपके सिस्टम में,
तब आपकी जो बैलेंसिंग एक्टिविटी है वो अच्छी तरह आगे जाएगी। तो बहुत की इम्पोर्टेंस होती है स्टेबल वाइब्रेशन की और स्टेबल फेज की। तो हमेशा जब भी बैलेंसिंग करें आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि हर रन पे आपका वाइब्रेशन और फेज रीडिंग स्टेबल आ रही है या नहीं। थैंक यू सो मच।